Hey friends, good morning and welcome back once again to Easy English Explanation by Pooja Joshi. So here we would like to start with the third video of lesson number 1, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. In this lesson, I have already explained and posted the first two videos, given you the summary in short. Again, I would like to tell you, in this lesson, author Khushwant Singh has described his relationship beautifully with his grandmother. What kind of bond he shared with his grandmother, what kind of, how his grandmother looked like, what were the positives and negatives, and how he shares the beautiful experiences और ही स्केचेस द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड वह अपनी दादी माँ के बारे में क्या सोचता था, उसकी दादी माँ कैसी दिखती थी, उनकी दादी और उनका कितना सुंदर खूबसूरत एक प्यारी सी रिलेशनशिप थी। तो उसके बारे में हम जानेंगे लेसन में। ऑलरेडी 2 वीडियोस इस लेसन के फर्स्ट और सेकंड वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। दिस इज़ द थर्ड वीडियो रिलेटेड टू द लेसन। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने देखा सेकंड वीडियो तक हमने ये देखा कि ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह शहर में आ चुके थे। दे हैव कम टू द सिटी अलॉन्ग विथ Khushwant Singh's parents. So here everything is new in his school. He is being taught the law of gravity, Archimedes principle, and world around. But this, as well as the music lessons, is making the grandmother disturbed and unhappy because she was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars, and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. Actually, grandmother was not at all satisfied that why music lessons were given to Khushwant Singh in the school. She believed that God and God related books, scriptures, and the holy book teachings should be only there in the school, because that is what they should learn. Any child should learn, according to his grandmother. She believed that music had lewd. Lewd means like badda, ashishta. Lewd is not associated with good. That is an offensive language. And she believed that music is only meant for, it is the monopoly, म्यूज़िक एंड डांस इज़ द मोनोपली, एकाधिकार किसका होता है, हार्लोट्स और बेगर्स का, यानी वेश्याओं का और भिखारी वह लोग ही नाचने गाना सिर्फ उन्हीं का काम होता है, ना कि सभ्य लोगों का। अच्छे घर के लोग नाचते गाते नहीं हैं। प्रीवियसली पहले के ज़माने के लोग, स्पेशली ओल्ड पीपल, बिलीव दैट म्यूज़िक इज़ नॉट मेंट फॉर द gentle people, rather it is meant only for the harlots and beggars. म्यूज़िक किसके लिए बना है, harlots means a woman who is having the sexual encounters with more than one person, and beggars, that is भिखारी, and monopoly means उन्हीं का एकाधिकार है। She afterwards didn't say anything, but her silence meant disapproval. She did not agree that music should be taught to students in school. So from that day, she very rarely talked to Khushwant Singh after that day. इसलिए उनकी दादी ने अपना कम कर दिया एकदम बोलना खुशवंत सिंह से, क्योंकि वह मानती थी कि म्यूज़िक पे किसका अधिकार है, म्यूज़िक सिर्फ वेश्याओं और भिखारी के लिए ही बना है, प्रॉस्टिट्यूट्स और भिखारियों के लिए बना है, और सभ्य अच्छे लोगों के लिए, अच्छे घर के लोगों के लिए म्यूज़िक और डांस का नहीं होना चाहिए। मतलब देन लेट मी शो द मीनिंग। ये उन्होंने कुछ तब नहीं कहा, पर उनकी शांति का मतलब ही था कि वह इस बात से एग्री नहीं करती कि स्कूल में म्यूज़िक सिखाना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करती थी। डिसअप्रूवल मीन्स अस्वीकृति। लेट मी शो यू द वर्ड मीनिंग्स। डिसअप्रूवल, हार्लट्स एंड ल्यूड। लेट मी शो यू सम वर्ड मीनिंग्स। Disapproval means asvikriti.
You can see profession or position or expression of an unfavorable opinion. वो उसकी फेवर में नहीं थी कि स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाए. हार्लट का मीनिंग होता है कि ऐसी वुमेन जिसके एकदम कैजुअली एक से ज़्यादा सेक्सुअल इनकाउंटर्स और रिलेशनशिप्स रहते हैं. मोनोटोनी मीन्स लैक ऑफ वैरायटी एंड इंटरेस्ट, एक रास्ता. ल्यूड मीन्स अशिष्ट, भद्दा, खराब. ऑफेंसिव, क्रूड एंड ऑफेंसिव इन अ सेक्सुअल वे. ओके, तो चलिए वापस आते हैं. Then I'll read from here. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. When writer went to the university, he was given a separate room because now he had grown bigger. So now the common link of friendship, that is the common room of Khushwant Singh and his grandmother, was snapped means snatched from them. They both now were living in separate rooms. So the common link of friendship, so that they can remain in the single room and have good bonding and relationship with each other. Then his grandmother also accepted her seclusion. Seclusion means state of being lonely or alone. Like, she accepted her seclusion with resignation. Seclusion means her loneliness, and she accepted it with resignation. She gave resignation and she made herself apart, away from everybody. Then she very rarely she left the spinning wheel where we make threads from cotton, Gandhi ji ka charkha, and then from sunrise to sunset she sat by the spinning wheel and she continuously recited prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Let's see the word meanings also. Veritable means true, that is real, सच में. bedlam means जैसे हंगामा होता है या कोई पागल खाने में chaos or confusion, like disorder. Chirrupings means the voice of the sparrows. I'll show you all these word meanings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जैसे ही राइटर यूनिवर्सिटी में गए तो उनका और उनकी दादी माँ का कमरा अलग हो गया, जिसके बाद दादी माँ एकदम चुप सी हो गई और एक जो कॉमन चीज़ थी दोनों में कि एक ही कमरा शेयर करते थे दादी माँ और उनके पोते यानी खुशवंत सिंह, तो वह भी अलग हो गई. इसलिए दादी माँ ने अपने सेक्लूशन यानी तन्हाई, उनके अकेलेपन को, अकेले रहने को उन्होंने अच्छे से स्वीकार कर लिया और वह सबसे फिर अलग ही रहने लगी. The seclusion means the state of being private and away from other people. दूसरे लोगों से दूर, अपने आप को अलग कर लिया था और दादी माँ ने एक दूरी बना ली थी. वह हमेशा अपना स्पिनिंग व्हील या चरखा ही चलाती रहती थी, जिसे वह कभी छोड़ती नहीं थी. सुबह से शाम तक, सुबह सूर्योदय से शाम को सूर्यास्त होने तक वह बैठी रहती थी अपनी स्पिनिंग व्हील पे और रुई से धागा निकालती रहती थी और अपनी भगवान का नाम भी लेती थी, अपनी प्रार्थना बोलती रहती थी.
सिर्फ दोपहर के समय में वो थोड़ा रिलैक्स करती थी, और जिस वक्त वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी और उसके लिए वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, 100 के करीब बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स आते थे। कहने का मतलब है कि बहुत सारे बर्ड्स उसके आसपास, दादी माँ के आसपास आ जाते थे, और उन जिनके आने की वजह से खूब सारी आवाज़ें होती थी और ऐसा लगता था कि बहुत ही केओस और डिसऑर्डर है, बेडलैम है चिरूपिंग्स का। चिरूपिंग्स मतलब जो उनकी आवाज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाती थी, एक वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरूपिंग्स हो जाता था। लेट्स सी इफ देर इज़ ओके, लेट्स कम बैक हियर। चिड़िया इतनी सारी इकट्ठी हो जाती थी कि उनके आसपास बहुत सारे आवाज़ हो जाती थी, डिसऑर्डर हो जाता। कुछ चिड़िया तो आके उनके पाँव पे बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधों पे, कई चिड़िया तो उनके सिर पे भी बैठ जाती थी, पर फिर भी वह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती थी या उन्हें शू नहीं कर देती। शू कर देना मतलब जैसे उड़ा देना, उनको वहाँ से भगा देना आवाज़ करके या डांट के, डरा के। पर ये आधा घंटा उनकी ज़िंदगी का, उनके दिन का सबसे खुशी से भरा हुआ होता था जब वह चिड़िया के साथ रहती थी। When she used to stay with the sparrows for half an hour, it used to be, this was the happiest half an hour of her day. Let's see ahead, children. When I decided to go abroad for further studies, then I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Here, what happens in this paragraph? When he decided that he'll go abroad, the writer decided, Kushpan Singh, that he'll go abroad for studies. He was sure that grandmother would not like it. Grandmother would not like herself to be separated from her grandson. So they both will be separate. So writer was thinking that grandmother would be upset. She would be sad because he was going to leave her after all for 5 years, and she was so old that it cannot be tell. One could never tell means it cannot be told that when he will come back that grandmother would be alive or she won't be alive. It is not fixed. Death is not fixed. So anytime may be possible she could die. But grandmother could. She was not even sentimental. Sentimental means emotional. She was not taking it in a negative way, or she was not being depressed or sad. Rather, she came to drop the writer at the railway station, but she did not talk or say anything. She did not show any happiness, anger, sadness, or any other emotion. Her lips, she was continuously moving her lips in prayer. She was telling the prayers and telling the beads of her rosary. I have already told you the meaning of beads of her rosary. Okay, it is used to chant the name of God. She silently kissed forehead of the author Kushwant Singh, and when Kushwant Singh left, he could feel the moist impression, the moist print of the grandmother's kiss on his forehead, as it was the last sign of any physical touch between him and his grandmother. Let me show you the meaning of cherished moist imprint. Cherished, the moist imprint. Okay, let me show you these words. Cherished means, yes, let me show the meaning of cherished means he would longed, he had that
remembrance in his heart, protect and care for lovingly. He wanted to protect that kiss always which was given to him by his grandmother on his forehead. He was feeling very dear about his grandmother. As he loved his grandmother, he felt that it should always stay, that kiss should always stay. He cherished that imprint. Imprint means a mark or outline by pressing something onto a softer substance, जैसे कि कोई छाप, निशानी या चिन्ह. Imprint. Moist means having, containing moisture. Yes. तो चलिए अब हिंदी में देख लेते हैं इस पैराग्राफ को. जब राइटर ने सोचा कि वह बाहर जाएंगे, इंडिया से बाहर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जाएंगे, तब उन्हें लगा कि उनकी ग्रैंड मदर ज़रूर, उनकी दादी दुखी हो जाएंगी और अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि आखिरकार वो 5 साल के लिए अपनी दादी को छोड़ के जाने वाले थे. और उनकी दादी की अब जितनी एज थी, तो उसमें कहना बहुत मुश्किल है उस बारे में कि वह कभी भी कुछ भी हो सकता था. पर ग्रैंड मदर ने बिल्कुल भी कोई इमोशंस नहीं दिखाए कि राइटर 5 साल के लिए उनसे दूर जा रहे हैं, और ना ही वो उदास और दुखी हुई, बल्कि वह उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई. उन्होंने कोई रास्ते में बात नहीं की, ना ही कोई इमोशन या अपनी भावनाएं जाहिर की, भावनाएं दिखाई, बल्कि वह कंटिन्यूअस प्रार्थना कर रही थी और उनका दिमाग प्रार्थना में ही खोया हुआ लग रहा था. उनकी उंगलियों से वो अपनी माला के मन के फेरे जा रही थी, अपना भगवान का नाम लेते जा रही थी. उन्होंने सिर्फ एक बार राइटर के माथे पर किस किया, जिससे कि राइटर कभी भूलना नहीं चाहते, कि वो हमेशा ये याद रखेंगे, जो किसकी जो छाप है उनके माथे पे हमेशा रहेगी, उसकी जो निशानी की तरह वो रखेंगे उसे, उसकी छाप हमेशा उनके दिल में रहेगी, और उसके लिए हमेशा वो चेरिश करते रहेंगे, हमेशा उसे याद रखेंगे और अपने साथ रखेंगे, क्योंकि ये एक आखिरी निशानी थी एक दूसरे से कांटेक्ट में आने की. Okay, let's see ahead. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. But when writer came back after 5 years, grandmother even came to take him that time at the station. She had come to drop him there after 5 years. She again came back to receive him, pick him up from the railway station. She did not look a day older. She looked the same as the writer had left her. Same 5 years earlier grandmother, and she embraced that, hugged Khushwant Singh and took him in his arms. Then writer could still hear that she was continuously reciting prayers. Even on the first day when he arrived, her happiest moments, even then the happiest moments were with the sparrows, whom she fed longer. Now she fed sparrows for long time, and with frivolous rebukes. Let's see the meaning of frivolous rebukes. Rebukes मतलब डांटना, फटकार लगाना, to scold and angry to, but here frivolous. Frivolous means in vain, of no importance. I'll show you the meanings. Frivolous rebukes means तुच्छ फटकार, नकली फटकार, कोई serious purposefully नहीं, not having any serious purpose or value, frivolous. And rebukes means express disapproval or criticism of because of somebody's behavior or actions. Let's see the meaning of this paragraph in Hindi as well. चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं इस पैराग्राफ का मीनिंग. जब राइटर की ग्रैंडमदर उन्हें स्टेशन पे छोड़ने आई थी 5 साल पहले,
उसी तरीके से वो उन्हें लेने भी आई 5 साल बाद। एक भी दिन वो बूढ़ी नहीं दिख रही थी, एक भी दिन जैसे ज़्यादा बूढ़ी हो गई ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर भी वह बिल्कुल बातें नहीं कर रही थी, बल्कि अपना सारा समय अपनी प्रार्थना में ही लगा रही थी। तब भी जब वह राइटर को उन्होंने अपनी बाहों में लिया था, दादी पोते मिल रहे थे, तब भी वो कोई बातें नहीं कर रही थी, पर वह सिर्फ अपनी प्रार्थना में ही मग्न थी। जिस दिन राइटर वापस आए 5 साल बाद, तब भी दादी माँ का सबसे खुशी का समय अपनी चिड़िया के साथ था, ना कि राइटर के साथ। और राइटर वो अपनी चिड़ियाओं को और ज़्यादा टाइम तक खिलाने लगी थी और खिलाने पिलाने लगी थी, और उनके साथ उन्हें डांट फटकार भी लगा रही थी। पर ये डांट फटकार कोई सीरियस वाले रिब्यूक्स नहीं थे, बल्कि फ्रिवलस थे। मीन्स ये डांट फटकार खाली नाटक जैसी या मजाक में थे, इनका ऐसा कोई सच मीनिंग नहीं था। वैसी तुच्छ सी माइल्ड सी उनको फटकार लगा रही थी। लेट्स सी द फोर्थ वीडियो इन द नेक्स्ट सेशन। आई विल कम अप विद द फोर्थ वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी मिलेंगे फोर्थ वीडियो में। प्लीज़ डू प्रॉमिस मी दैट यू विल टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ टिल द टाइम बीइंग। बाय बाय, सी यू।